Hello and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another exciting episode of the Swanky Doctors podcast. This is your host Ali Haider, and today we have a very special guest with us, Mr. Anas Niaz, who is the founder of Bioniks, which is one of the Pakistan's leading prosthetic arm manufacturing company. So, Mr. Anas, welcome to the show, and thank you so much for joining us today. Thank you so much, Heather, for having me here. Sure. So, Mr. Anas, let's start the conversation with a couple of basic questions like where were you born? How was your early life like? And where did you get your early education from? So I was born in Upstate. It's a small town in Spain, and currently I'm also there for my Eid holidays. So yeah, so I was born there. I did my almost intermediate from here, and after my intermediate, I like went for the higher education in Karachi, Zabas. So from there, I did my robotics. You can say in a simple word, mechatronics engineering. So this is how my academic careers and everything was started. Okay, then after you graduated from Zebist, did you go for any job या फिर आपका directly focus थे towards your own startup? So the best part was that I never wanted to do a job, and I had my experience of doing job. But I was in Webster, so I was doing the radio hosting. So I have my experience of doing radio shows and everything. It's totally related to media. But when I realized that I can do something more just on coming onto the screen and just thing like that. So मैंने जब कराची गया तो after in third year of my university, so I started planning to do a business, and then in that period of time, I met my friend Awais. He's also a co-founder of Bioniks, and then we both started a company with the name of Bioniks. Yeah. Okay, so I would like to know, okay, how did you get this idea of getting into the prosthetic arm manufacturing industry? Like, is there a particular story behind it? Yeah, it's kind of a strange because we both are robotics engineer, and we never ever met somebody with disability before in our family. So हमें कोई idea नहीं था कि disability क्या होती है और क्या challenges होते हैं, क्या sufferings होती है. Because आप लोग तो doctors हैं और आप लोग सब पढ़ते हैं और engineering के अंदर ही सारी चीजें नहीं पढ़ाते जो आई बिलीव पढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता हो. बट फॉर्चुनेटली हमारे साथ इस तरह से हुआ कि हमने पहले ही स्टार्ट की कंपनी विद द नेम ऑफ द स्पॉस कॉर्पोरेशन. इसका सोली एम ये था कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग लोग करते हैं उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, एड किया जाए और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उनको लेके जाया जाए. और ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे पास एक फैमिली ने कॉन्टैक्ट या एक रैंडम सी हमारे पास ईमेल आई और उन्होंने कहा कि जब आप लोग डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं, रोबोटिक्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो व्हाई डोंट यू मेक अ प्रोस्थेटिक आर्म फॉर माय लिटिल बॉय. वो 5 साल का बच्चा था, उसका नाम ही बयान बलोच था और वाज बोर्न दिस वे. तो हमने कभी नहीं फैमिलीज में या फ्रेंड्स में देखा था कि मतलब कि कभी भी कोई विदाउट आर्ट इस तरह का भी इंसान नहीं देखा था. सो हमने कहा चलो लेट्स डू समथिंग और इस बच्चे के लिए हम कुछ बनाते हैं. और जब हमने उस बच्चे से पूछा कि आपको किस तरह का प्रोस्थेटिक आर्म पसंद है, और उसके पेरेंट्स वर लाइक इंसिस्टिंग हिम टू गो फॉर द स्किन कलर और स्किन मैच होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. But suddenly वो जो बच्चा था he couldn't speak Urdu properly because he belonged from Baloch family. तो वो टूटी फूटी उर्दू में और इंग्लिश में मिक्स करते हुए उसने कहा I like Iron Man. Okay. तो हमने कहा okay let's do it, like let's make a Iron Man ad. और हमने जो है मैंने और रवीश ने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की. We designed the first prototype which was not actually very good. Then उसकी अमेंडमेंट्स हुई एंड देन फर्दर हमें टाइम लगा ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हमें लग गए जिसमें वो फैमिली आती थी, वो अपने टेस्टिंग्स करते थे एंड देन दे गो बैक. और उसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फिर हमने कहा नहीं यार एक दिन क्योंकि वो बच्चा रोज आपके जब वो हमारे पास आता था तो वी ऑलवेज यूज्ड टू क्वेश्चन कि मेरा आर्म कहाँ है, मेरा आर्म कहाँ है. Yeah. वी थॉट कि यार आज तो ये विजिट करने आएगा तो वी हैव टू डू इट एनी वे. तो हमने 3 दिन ऑलमोस्ट ऑफिस में गुजारे, रातें वहीं पे ही गुजारी.
सो पूरी लाइक हमने ऑलमोस्ट मतलब कि सूरज आर्मी देखते हुए तो 3 दिन हमने उसके ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत की और देन वी डिड आयरन मैन प्रोस्थेटिक आर्म और जब वो बच्चा आया एंड वी गिव हिम दैट प्रोस्थेटिक आर्म इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस दैट वो एक छोटी सी चीज जो हमारी नजर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी बट इट वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग बट it was everything for that boy. So we realized कि यार ये क्यों ऐसा है? Why this solution is not available in this country? So हमने थोड़ी सी research की and we found out that 60% of the civil population from the entire world is living in this region, like India, Pakistan, Bangladesh. एंड सरप्राइजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को बना रही हो, को डिज़ाइन कर रही हो, लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो. सो वी डिड दैट चैलेंज और हमने कहा नहीं यार इसको करना चाहिए एंड वी स्टार्टेड मेकिंग वी मेड सोशल एंटरप्राइज और इस सोशल एंटरप्राइज का पर्पज ये आगे इस तरह के जो भी गैजेट्स हैं बायो रोबोटिक्स रिलेटेड वी हैव टू मेक देम लोकली एंड हेल्प those people who are unable to afford the high expensive products like these. Sorry, that's impressive. And Mr. Anas, can you please tell us a little bit about your product line? Like, what are some of the different models that you are currently offering, and what features do they offer? So right now, our product is very much advanced, and it's like it's active, 100% active. You just have to pop your hand, some application system inside your hand. And it gets synchronized with your nerve endings पे जो signals आ रहे होते हैं muscles के through. So वहाँ पे हम अपने signals हैं वो extract करते हैं. It's all non-invasive. आप जिस तरह से स्मार्ट वॉच पहनते हैं it can detect your heart rate and it can detect your other vitals. Yeah. तो इसी तरह से हमारे सेंसर्स भी आपके जो signals आ रहे होते हैं उसको detect कर लेते हैं and then converts it to the practical motion. जो कि इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है. तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज पाकिस्तान के अंदर इस एनवायरनमेंट के अंदर तो वो ये था कि लोग बहुत ज़्यादा अपने हाथों से काम करते हैं. It's mostly labor intensive work, like for example somebody is working in the field, somebody is working in a very harsh environment और कोई ड्राइव कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो इस तरह के आर्म्स जो है यूजली जो बेसिक $50,000 पे फोर्टी क्यों ना हो वो भी यहाँ पे मतलब कि माइक फंक्शन कर जाते हैं, नहीं चलते हैं, टूट जाते हैं. तो हमारे पास जो चैलेंज था दैट वाज टू मेक अ प्रोस्थेटिक आर्म व्हिच शुड बी लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी फंक्शनल एज वेल. तो ये तमाम चैलेंजेस को फिर हमने इंजीनियरिंग के साथ के साथ मिल के सॉर्ट आउट किया. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग like beyond our expectations. Yeah. Okay, Alhamdulillah. Anas bhai, I was scrolling through the website of Bioniks and I found out that there are 3 different variants of the arms that are currently being offered. So उस पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि what are the differences between these 3 variants and what's the exact technology behind the functioning of these prosthetic arms? So there are definitely you are right. There are 3 variants, and one is known as in the 2.0, the most popular one or the most durable one. What I can say is, and वो काफी ज़्यादा मतलब कि harsh environment के लिए बनाया गया है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा उसको मतलब extreme conditions में इस्तेमाल करना चाहते हैं. And then we have a few models which is purely for the psychological impact और उन लोगों का जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑफिस गोइंग है, मतलब उनके पास अपनी पर्सनलाइज गाड़ी है, थोड़ा सा मतलब नीश मार्केट आप कह लें उसको, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर our main focus is to change their personality and their like their self-esteem आप उनकी boost कर रहे होते हैं. So that's why it has a black color, the black X. अगर आप देखेंगे तो एक Terminator kind of look है उस arm का और वो boost कर रहे होते हैं. It has the sound of motors when we try to open and close fingers. So it makes a very like futuristic product और वो भी boost कर रहे हैं. And just like Moz is playing guitar with that prosthetic arm और काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं. और जो बच्चों के लिए है then we have zero prosthetic arms for people जो मतलब छोटे बच्चे हैं
we want them to feel empowered rather than feeling disabled. So we want them to feel more than that. So we're putting different colors, customization, and everything is possible onto that part. So we thought that disability is a challenge, but the main challenge is your psychology. So अगर आप अपने जहन से माजूर हैं तो बेशक आप के पास तमाम चीज़ मौजूद हो, तमाम लिम्स मौजूद हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, still you are unable to do a lot of things. So वो फिर जहनी मासूरियत होती है. So we have to counter both parts. It's not only giving the limbs, but also empowering them with the help of technology. ओके, दैट्स इम्प्रेसिव. अनस भाई, मार्केट में या मोस्टली जो मैंने आज तक लोगों को देखा है, उनके पास जो प्रोस्थेटिक आर्म्स लगे होते हैं, वो कह लें कि बस आर्टिफिशियल लिम्ब ही होता है विच इज़ नॉट फंक्शनल. तो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ इज़ योर आर्म डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज ट्रेडिशनल प्रोस्थेटिक आर्म्स. So जो market में available and they are mostly almost every prosthetic that you see like that is imported and it almost costs the same. But challenge ये आ जाता है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है जिसकी वजह से हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि वो प्राइस जो है उनका डाउन हो जाता है और हमारी प्राइस से थोड़ी सी अप होती है. बट अगर आप सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है. लेकिन जो हमारे प्रोस्थेटिक है उनके अंदर खास बात ये है कि उसके लिए आपको कोई हार्नेस नहीं पहनना पड़ता. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट नीड टू पॉप योर हैंड इनसाइड एंड वो आपके जैसे आप शूज पहनते हैं इन अ सिंपल वे, जैसे आप शूज पहनते हैं तो शूज के लिए आपको स्ट्रैप अलग से ऊपर से मारना नहीं पड़ता. तो यू जस्ट हैव टू वेयर इट एंड दैट्स इट. सो हमारे आर्म्स डिजाइन है वो उसी तरह से है कि आप उसको बहुत इजीली पहन लेते हैं एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो लाइट वेट है, इसलिए वो ऐसा हो पाता है उसके साथ. मार्केट में जिस तरह के प्रोस्थेटिक आर्म्स है तो आपको वो एक हार्नेस यहाँ पे बेल्ट की तरह पहनना पड़ता है एंड इफ यू वांट टू डू सर्टेन मोशन तो आपको उसको एक पुश करना पड़ता है जिससे उसको थोड़ी सी फिंगर्स खुलती हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ कि आप उससे एक ग्लास या कप या कोई भी ऐसी चीज पकड़ सकें जिससे आप उससे काम कर सकें. The main purpose of that prosthetic, the dumb prosthetic, is to get a एस्थेटिक्स के लिए होता है. हाँ, या क्लास कि आप लोगों से छुपना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि लोग आपको नोटिस करें या आपको एक सिंपैथी की नजर से देखें. They don't want that. So इसीलिए वो छुप रहे होते हैं, हम इसीलिए वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होते. बट जैसे जैसे हम लोगों के ऊपर काम करना शुरू हुए हैं एंड वी वर सरप्राइज्ड टू नो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा रेशो है जिनकी एम्पुटेशंस होती है. सही. और अनस भाई, कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग दैट आर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज वाला पार्ट और उसके बाद जो रीहैब तक सारा जो कह लें कि प्रोसेस होता है किसी भी कस्टमर का, उससे हमें काइंडली थोड़ा सा कह लें कि ओवरव्यू दे दें वो कैसा होता है सारा. बिल्कुल सही है. सो हमारा जो प्रोसेस है हमने उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि हमारे जितने भी लोग हैं जो बेनिफिशरीज हमें कॉन्टैक्ट करते हैं they belong from a very very remote areas. So शायद बॉर्डर के पास है, कोई कहाँ है. So sometimes they even can't speak Urdu properly. So आप ये तो भूल ही जाए कि आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे and you have like lot of recipes and everything. It's not like that. So what we do is we just give them a WhatsApp number, or after WhatsApp they can just phone us, or कुछ informations होती हैं, basic information होती है. For example, past amputation हुई है, what was the reason of amputation, और अभी क्या कर रहे हैं, what's their lifestyle and everything. तो वो अपनी तमाम डिटेल्स हमें जो है वो दे देते हैं और वो हमारे पास रजिस्टर हो जाते हैं. And if they can't afford the prosthetic, तो हम उनके लिए sponsors ढूंढते हैं and then we provide them a prosthetic 100% free of cost. और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तभी they can like have the prosthetics in the same way. और जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि फिर जब आपको हम एक अपॉइंटमेंट जनरेट करती है हमारी टीम और आपको बताती है कि आप इस दिन हमारे केयर सेंटर आ जाएं, which is currently located in Karachi, but we are also planning to have multiple care centers in different part of the country. But currently कराची है तो लोगों को ऑल द वे ट्रैवल करके आना पड़ता है और तकरीबन 7 से 10 दिन उनको स्टे करना होता है, which includes उनकी काउंसलिंग होती है. वो जब आते हैं फर्स्ट टाइम जब वाइजर होते हैं हमारे केयर सेंटर में, तो वो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं बेनिफिशरीज हैं जो जिनको आर्म लग रहा था और नाउ दे आर वर्किंग एज अ टीम मेंबर.
तो वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, दे टेल देम हाउ टू यूज द प्रोस्थेटिक, रादर देन कि अगर कोई सही इंसान बताएगा तो ऑफ कोर्स वो कहेंगे कि आप तो खुद अल्लाह का शुक्र है इस कंडीशन से नहीं गुजरे, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। तो उन्हीं की तरह के लोग होते हैं, दे उनकी बड़ी अच्छी सिनर्जी बन जाती है, दे गाइड देम, दे एक्सप्लेन कि क्या होगा कैसे होगा, एंड देन फिर उनके कुछ फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं जस्ट टू स्ट्रेंथन देयर मसल्स, बिकॉज वो जो कनेक्शन होता है एम्पुटेशन के बाद, जो फैंटम लिम्ब होता है, तो अक्सर लोग उसमें भूल जाते हैं। सो द फैंटम लिम्ब इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस in this case, because उन्हीं signals को extract करके we are making them. So उस process के बाद उनकी measurements होती हैं, और measurements होने के बाद हम जो है उनका मतलब उनकी fittings होती हैं, and then उनकी training होती है, और फिर वो वहीं पे अपना सारा process learn करते हैं, and they go back. And then interesting part in this is कि जब वो चले जाते हैं तो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब अगर वो पेशावर से आया है या इस्लामाबाद से आया है कोई भी बंदा, वो प्रोस्थेटिक लेके चला गया, खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो किस तरह से मैनेज होगा, बार बार आना जाना करना इस इजी जॉब। तो हम क्या करते हैं कि हमारे आर्म के अंदर जो है वो AI सिस्टम मौजूद है, और इसके थ्रू आप हमारी बायोनिक्स की ऐप मौजूद है, आप हमारी बायोनिक्स की ऐप के साथ अपना आर्म कनेक्ट कर लेते हैं, एंड उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या फंक्शनैलिटी है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वी कैन फिक्स देम रिमोटली, सो यू डोंट हैव टू come again for your prosthetic arm or सारी fittings and सारी चीजें. So it can be done all remotely. You don't have to travel. You just have to travel once, and second time फिर आपको कभी भी मसला नहीं होता। और अगर in case of ह्यूज प्रॉब्लम जिसमें कोई चीज टूट गई या खराब हो गई, तो वो हम फिर एक कुरियर कर लेते हैं, देन यू जस्ट हैव टू सेंड योर प्रोस्थेटिक आर्म बॉक्स, और हम उसको रिपेयर करते हैं एंड सेंड इट बैक टू यू। सो इट्स दैट सिंपल। लाइक आपने कभी दुनिया में मतलब के इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं देखा होगा कि प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री में आप कुरियर कर रहे हैं प्रोस्थेटिक, और वो ठीक होके वापस आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूजर्स हैं, they are all across Pakistan, and not only in Pakistan but also outside the Pakistan. So they are using it very like comfortably and doing their task every day. Okay, that's very impressive. Anas bhai, can you please tell us कि इसका जो सारे parts हैं prosthetic arm के, इनकी in-house manufacturing यहीं पाकिस्तान में हो रही है, या फिर you are just importing the parts और उसको assemble कर रहे हैं? नहीं, सो इसकी जो तकरीबन 90% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पे पाकिस्तान में हो रही है। इसमें सिर्फ मोटर्स होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी डोंट हैव द रीच फैसिलिटी जहाँ पे स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ग्रेड मोटर्स बनाई जा सकते हैं। तो वो हम जर्मन मोटर्स इंपोर्ट करते हैं। द मोटर इज जस्ट लाइक द इंजन ऑफ एनी प्रोस्थेटिक, सो इट्स इन अ सिंपल वे। तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, एंड देन वी हैव द सिलिकॉन ग्लव्स, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसके जो सेंसर्स हैं, इनकी जो बैटरीज हैं, सॉरी इनके जो सेंसर्स हैं और इसके जो सर्किट्स हैं, वो हम यहीं पे ही लोकली बना रहे होते हैं। इसका जो फ्रेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मैकेनिक्स है, वो सारी हम लोग बना रहे होते हैं। इसके जो सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, द कार्बन फाइबर, द एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से हम यूज करते हैं, वो भी हम यहीं पे लोकली मटीरियल लेके बना रहे होते हैं। बस इसकी बैटरी, ग्लव्स एंड मोटर, 3 चीज़ें हैं जो हमें फिलहाल import dependent है, but इंशाल्लाह we are trying our best इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता gradually खत्म कर। Okay, that's cool. And Anas bhai, can you please tell us कि on average ये prosthetic arm cost कितना करता है इस time to the end consumer? So basically जब हमें इसको initially start किया था, तो the catch for the world was कि हम इसको $2,000 में बना रहे थे, और $2,000 in the sense कि दुनिया में इस लेवल के प्रोस्थेटिक आपको $3,000 से स्टार्ट होते हैं। बट ड्यू टू इन्फ्लेशन तो अब वो $1,200 पे चला गया, बट वी हैवंट रीच्ड द प्राइस येट। और फिलहाल की ऐसी इंटेंशन भी नहीं है कि हम प्राइसेस की इंक्रीज करें। तो कंपेरेटिवली 3,75,000 to 4 lakh रुपीस का ब्लू एल्बो प्रोस्थेटिक आर्म हमें मिल जाता है, विच इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज, ट्रेनिंग, settings and everything, और उसके साथ साथ जो उसकी ऐप की सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम, कभी भी कोई मसला होता है, यू जस्ट नीड टू कॉल अस एंड हम यहाँ से रिमोटली उसको फिक्स कर देते हैं। और उसके अंदर एक बहुत सबसे अच्छी चीज़ जो हम ऑफर कर रहे होते हैं अपने बेनिफिशरीज को, कि
टाइम टू टाइम कुछ जो छोटी अपडेट्स होती हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे होते हैं. वी डोंट चार्ज ओके. फॉर दैट. सो अगर लेट्स सपोज पे हमारे पास कोई ऐसी बैटरी हमने बना ली है जिसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम उनको कहते हैं कि हम आपको एक अपनी नई बैटरी भेज रहे हैं, आप पुरानी बैटरी हमें वापस भेज दें. तो इट्स लाइक दैट. तो हम लोगों के साथ बड़ा ही क्लोजली काम कर रहे होते हैं. It's the sole purpose is not only to make business but also to help people जो कि मतलब किस कंडीशन से गुजर. Okay, that's really cool. Mr. Anas, I was going through your profile and I found out that you're also the founder of another startup named as Whiskas. So can you please tell us what's that and what kind of services are being offered over there? So that is kind of a very interesting startup, and it's also very close to my heart because उसके अंदर there are a lot of limitless possibilities to do. And उसके अंदर हम लोग जिस तरह से मैंने I started with that कि आपने product designing development company start की. So this is that part. So हम लोग internationally, locally जो भी problem हमें नजर आ रही है products के अंदर, so we help companies, startups to design their products locally और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं और उसकी डिजाइनिंग डेवलपमेंट so that they can like bring that product into the market. तो वो तमाम इंजीनियरिंग उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे होते हैं. So that's the one जो आप डिस्कस के नाम से जानते हैं. Say, and now coming towards a very interesting part, what kind of challenges did you face when you were starting both these startups, or how did you overcome all those? So there are multiple challenges if we talk about Pakistan. Is like Pakistan के अंदर हमारे पास क्योंकि टेक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, mainly focus on to the agriculture side. And then especially अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर तो बिल्कुल ही नहीं है. It's like rare to find any startup or any company who has the hardware product made in Pakistan. Usually सॉफ्टवेयर को आप देख रहे होंगे, एप्स को देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट physical product, that there is a challenge because you need a very kind of specialized person जो उसके ऊपर काम कर सकें. You need highly technical people जो कि उसको मतलब कि operational कर सकें, because arm is the most difficult part. So the main challenge is because it's a hardware product, so you need people जो कि इसको बहुत अच्छे से समझ सकें. Precision is the most important element in this product, because अगर आप इसका precision lose कर देंगे तो वो गिर सकता है आपका arm अपने socket से निकल के, फंक्शनल नहीं रहेगा, आप उसे आएंगे तो वो पीछे गिर जाएगा. So human resource was one of the challenge that we faced a lot and still facing, because पाकिस्तान में brain drain बहुत ज़्यादा है. And you find hardly good people with good skills in this country anymore. And apart from that, हमारा जो challenge था, that was the tech, because पाकिस्तान में tech के ऊपर बहुत ज़्यादा restrictions हैं. You cannot work onto the robotics unless you have an NOC from the Interior Ministry. So it's quite challenging. Then materials, you need a very precise and high grade materials which are not available, or you need a NOC which takes a lot of time to have those things. So ये तमाम चीज़ें हैं. And then the capital is also the big problem, because when you want to compete with the world, so you need a lot of capital. और खासतौर पे ऐसी इंडस्ट्री के साथ आप compete करने जा रहे हैं जिनके products ही $50,000 से start होते हैं. So it becomes quite challenging, but alhamdulillah, we have been receiving those challenges very frequently. तो अब हमें आदत हो गई है कि इस तरह से उनको solve करें. Okay, that's cool. अनस भाई, what I have seen, या फिर जनरली अगर सोसाइटी को ऑब्जर्व किया जाए तो हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सारी कह लें कि उस ट्रेडिशनल सिस्टम से जो भी बच्चा गुजरता है, बल्कि इवन हाउस होल्ड पे भी जो आपके पास ट्रेनिंग हो रही है उसमें कभी भी बच्चे को इनक्रेज नहीं किया जाएगा टू थिंक दैट बिग. और वो और स्पेशली जो कि मिडिल क्लास फैमिली से सारे बच्चे अगर होंगे तो स्टार्टअप तो उनके जहन में आता ही नहीं है. जबकि ऑन द अदर साइड या फिर अक्रॉस द बॉर्डर हम अगर इंडिया को ही देख लें तो वहाँ पे कोई एक बच्चा भी नहीं है जो यूनिकॉर्न से नीचे की सोचता हो. तो हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग, और आपका इस पर क्या व्यू होगा? Actually, as a nation, हम बहुत ज़्यादा different हैं. मतलब कि we don't want to work hard, but we want to enjoy the Instagram life, right?
So Yeah. मतलब कि हम चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी अर्ली लेवल पे सक्सेस मिल जाए, and we don't want to do the hard work part. And usually in entrepreneurship, startups, or business, it all looks very glamorous onto the screen and onto the LinkedIn post and everywhere. But when you're doing it, so you have to make your hands dirty while working on that sector. It's not something कि आपने बस सोचा and वो हो गया. So there is a lot of effort behind even a small pin, yeah, small pen जो आपके हाथ में मौजूद है. It takes a lot of effort to make just single pen. So I think हमारा जो curricular है, जो जो हमें techniques पढ़ाया जाता है, वो तो चले एक अलग है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें अपने आप को एज अ नेशन चेंज करने की ज़रूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमें मतलब कि किस चीज़ में ज़्यादा, बिकॉज देखें द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, द होल सिस्टम इज ओपन फॉर यू. आप चाहें नहीं करें, अब तो और AI सिस्टम्स आ गए, यू जस्ट नीड टू question it and it gives you the whole recipe of making a product. But we don't do that, right? We search how to make money, but we don't find the real essence of it. Like उसमें recipe तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो recipe लेके कहाँ से आनी है, we don't have that capability right now, and we don't want to do that as well. So Yeah. it's very important. और जो जो अब ये सारी चीजें जो है ना, अब टाइम चेंज होंगी, because we blame a lot onto the government side, we blame a lot onto the मतलब कि higher education commission को, because it's very easy to blame, right? आप किसी के ऊपर भी blame लगा सकते हैं and you are free because your mind is designed that way कि आप बस blame लगाने और बस आप आजाद हो गए. When it's not like that, you have to look into yourself. Like अगर आप कहते हैं कि आपने क्या मतलब कि आपको क्यों अच्छी चीजें नहीं मिल रही पाकिस्तान में, तो आपने ये भी देखना है कि आपने अच्छा क्या किया है. सो अगर आपने कुछ अच्छा किया है और फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रही, then you have a right to say something. But if you haven't done anything, you haven't tried anything, तो it's unnecessary. Because देखिए हमारे सामने जनरेशन के अंदर देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो भी इसी environment से निकल के आगे आए हैं. There are a lot of examples in our society, but we don't want to celebrate them, right? So if we start celebrating them, so I think it would be much easier for each one of us to actually idealize a person who के उन्हीं की grassroots level से निकला है and now he's doing something good. सही, ठीक हो गया. And Manas bhai, can you please tell us ke how do you see the future of this entire biological prosthetic arms evolving in next decade, और overall जो technological advancements हो रही हैं उसमें medicine को आप कहाँ देखते हैं within like let's say next decade? So अगर हम नेक्स्ट डेकेड्स की बात करें तो अगर मैं प्रोस्थेटिक आर्म्स की बात करूँ तो कि अब हमारे साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो हमारे लिम्स जो हैं दे बिकम ओल्डर और वीकर हो जाते हैं. लेकिन जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, सो द टेक्नोलॉजी कीप इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो जो मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद कुछ मे बी आफ्टर अ डेकेड probably people are going to remove their limbs by choice and will get the prosthetic arms on by choice. Because just like for example आपकी kidney की implants होते हैं या बाकी liver implants होते हैं, it's because आपके organs वो function नहीं कर पाते जो पहले कर रहे थे. तो इसी तरह से आपके limbs भी इसी category में आ जाते हैं when you are 60-65. तो वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उसके अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. सो पीपल विल स्टार्ट डूइंग दैट पार्ट. और जहाँ तक हम मेडिसिन की बात करते हैं तो बिकॉज हम 3D प्रिंटर्स और हाई 4.0 इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. तो वी डू बिलीव दैट कस्टमाइज मेडिसिन आना शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम में. तो वी नीड टू write your problem maybe on ChatGPT and it can give you a chemical formula and you just need to paste it on your 3D printer which has all the chemicals inside and it will make a medicine for you जो कि especially आपके लिए डिजाइन की होगी. तो अब जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा था वो खत्म के small pockets में जा रहा है because the hardware is relatively cheaper
than it was before. यानी कि अगर आपने पूरी मेडिसिन की फैक्ट्री खोलनी है तो you need a huge investment 10 years before, but आहिस्ता आहिस्ता आप देखें फैक्ट्रीज के साइज, इंडस्ट्रीज के साइज श्रिंक होते जा रहे हैं, एंड इट विल नियर फ्यूचर वो आपके डेस्कटॉप के बराबर जो है वो कंप्यूटर की जगह ले लेगा और वहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें बना के देगा। सही, दैट्स इम्प्रेसिव। अनस भाई, लाइक आप अपनी जो आपके पास कंपनी है बायोनिक्स, इसको कैसे विजन करते हैं, और आगे डू यू प्लान टू कोलैबोरेट विद अदर कहने के बिग जाइंट्स इन द इंडस्ट्री लाइक एनी टाइम सून? बिकॉज आई सॉ के देयर इज अ गाय नेम्ड एज डॉक्टर अदील अख्तर, आपने भी शायद देखा हो, इज़ द फाउंडर ऑफ सायोनिक्स। दे आर डूइंग अ सिमिलर वर्क इन यूएस एज वेल। तो मेरा ख्याल है अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करें या और बिग जाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करें तो आगे बस एडवांसमेंट्स और इसको स्केल करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, है ना, एंड यूज़र को भी आपके पास ऑब्वियसली बेनिफिट्स रहेंगे इसके। Yeah, definitely. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली एज अ एंटरप्रेन्योर एंड एज अ लाइक हम सब चाहते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए, so we are looking and we are open for the collaborations. We are in talk with multiple companies and because अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारे इस रीजन के लिए डिजाइन होता है, so that is designed for this region specifically because यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, that is totally different from people living in let's say US, because अगर आप US में किसी को बायोनिक आर्म देते हैं तो you will not expect him to do something which is very common in Pakistan. For example, आप उससे रोजाना खेती बाड़ी नहीं करेंगे $50,000 की प्रोस्थेटिक आर्म से US के अंदर, मतलब कैजुअली शायद कभी कभी गार्डनिंग कर लेंगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइवर ट्रैक्टर और टूटी फूटी सड़कों पे और उसके बाद आप उससे खेती बाड़ी नहीं करेंगे. इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. तो हमें जो अपने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं दैट इज इंटायरली डिफरेंट. सो हमें चाहिए होता है कि वो रोज आना इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको सस्टेन कर सके, रादर देन इट्स जस्ट लाइक if it's just like a same example, if you want a Tesla in Pakistan, I'm sure Islamabad mein ya aur mein to bahut better roads hai. But if you want to bring that Tesla, although it's very fantastic car, the marvelous technology and everything, but if you want to drive that car in Karachi, so it's not going to work, right? Because they have no infrastructure development. So although Tesla is a high-tech company, it has amazing everything, but it's not practical to drive a test time in city like Karachi, right? So this is the same way of analyzing the different technologies. Sometimes you feel that, okay, this is something great. It has a lot of neon lights. It has very good sound, very cool sound. But again, you have to see the practicality of this. Like, क्या वो इन तरह के environment पे चल सकता है जहाँ पे लोग उससे पत्थर भी तोड़ना चाहेंगे और उससे व्हील बैरोज उठाना चाहेंगे? So is it possible to do that? And how much would that be costing? Because in US and in other companies, they sell the prosthetic in $30,000 to $50,000, which is like impossible for any amputee in Pakistan to buy कर सके. So if you like, अगर आप बहुत ऐसी चीज बना रहे हैं एंड पीपल कैन नॉट बाय दैट अप, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प ऑल दोस कंपनीज जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं, एंड ऑफ कोर्स combining both the technologies together to find a middle ground in cost as well as technology and durability. So we are working on that, and inshallah soon we'll find out the ways. Because the main motive of every company and every individual who is working in this technology to help others. Okay, that's cool. Okay, now let's conclude the discussion, and I would like to ask one last question. What would be your advice to all the tech enthusiasts as well as medical professionals जो के plan करें to start startup in this healthcare industry? So the major advice I would say is to do collaboration between two, because the main problem in Pakistan is that we like collaborations. Like for example, doctors होंगे तो वो अपनी specific domain में काम कर रहे होंगे, engineers होंगे तो they are working in their own specific domain.
and eventually वो problem दोनों की solve नहीं हो पाती. Sometimes engineers की problem doctors के पास solution होता है, और sometimes doctors की problem का solution engineers के पास होता है. And we have to learn from the COVID environment, because at that particular time the both communities were working together to save a lot of lives, and it was very effective. So I think we have to do a lot of collaboration, and similar kind of knowledge पे या similar kind of mindset के लोग आपके startup में नहीं होने चाहिए. You have to find different people, maybe sometimes people who think uh, differently in a like, आप सोच भी नहीं सकते कि यार वो पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास होगा जो मतलब कि आपने कभी सोचा ही ना होगा. तो आपको Yeah. आपको इसी तरह से करना पड़ेगा. You need to find the balance in between, right? So आपको एक्सट्रीम एंड चाहिए होते हैं दोनों साइड पे. तो ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, सोचने की सलाहियत डिफरेंट हो, एंड देन आई बिलीव देन यू कैन मेक अ गुड टीम. एंड और जब आपकी गुड टीम आज हो जाती है, देन every idea is great, right? Because दुनिया में हर चीज की जरूरत है. इवन अगर एक छोटा सा मतलब कि एक वन पॉइंट की जो है क्यों ना हो, वो भी कोई ना कोई मैन्युफैक्चर कर ही रहा है दुनिया में. तो एंड इट्स सेलिंग, राइट? So हर चीज की जरूरत है. You just need to start something, and you have to uh, um, be passionate about it. You have to be consistent about it. Okay. Anas bhai, I would like to end the discussion here, and thank you so much for joining us today, and thank you so much for sharing your valuable insights with us. It was an amazing session. Balke, I would like to pay a tribute to you and your entire team for doing this amazing job at Bioniks, and I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much to all the viewers who have watched the episode till the very end. Join us next time for more exciting conversations. Until next time, Allah Hafiz.